चाहते हैं जल्द से जल्द, आपको मालूम है ऐसे नहीं कि 1 साल 2 साल के बाद हो, आज परसों अगले हफ्ते इसके अंदर कुछ हो जाएगा। सर मैं वेट में सर मैं प्रतीक, प्लीज वेट सर। मैं प्रतीक त्रिवेदी हूँ, आज तक टेलीविजन दिल्ली से आया हूँ। हाँ जी। पहला सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि के चक्रवर्ती साहब और रत्नाकर साहब बोले, आप बोले, के चक्रवर्ती साहब चुप हैं, क्या नाराज हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं? और दूसरी चीज ये मैं जानना चाहता हूँ, 4 तारीख से पहले क्या कैस्केट का ऑर्डर दिया गया था? 4 तारीख से पहले क्या इस बात की जो खबरें आ जाई हैं उसको बिल्कुल क्लियर करें कि 4 तारीख से पहले क्या आपकी तरफ से कैस्केट के ऑर्डर्स थे? और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं ट्रस्ट में डिफरेंसेस थे, इसको लेकर भक्तों के बीच में नाराजगी है, वो जानना चाहते हैं भगवान को लेकर कैस्केट का ऑर्डर पहले क्यों दिया गया? इसका पहला उत्तर है कि हमने कुछ कास्केट का ऑर्डर नहीं दिया है भाई। 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख इसकी सवाल नहीं होती। मैंने तो उत्तर दे दिया है कि ट्रस्ट के न्यास के द्वारा हमने किसी ऑर्डर नहीं दिया। दूसरा उत्तर ये है कि हमारे 2 न्यास के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके बीच में कुछ खिलाफत नहीं है, सब एकता है। भगवान हमने हमेशा एक पाठ सिखाया था कि एकता हमेशा बहुत जरूरी होती। और आपने कुछ पूछा अपने भाई चक्रवर्ती के बारे में, क्या आपने पूछा था? चुप है क्योंकि मैंने उनको कुछ मौका नहीं दिया है। ये अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि वो कहना चाहिए? जरूर वो बात करें। इतना लंबा समय था और बराबर मीडिया में कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, वो स्टेटमेंट नहीं आया। अगर पहले आ जाते तो ये सारी चीजें नहीं होती। सर, दिस इज द वे। और ये शायद ये कम्युनिकेशन गैप था, दिस इज द ओनली रीजन कि हम लोग को बहुत सारी कंफ्यूजन रहा और क्लियर चीज पिक्चर नहीं मिल पाई। अगर आपकी तरफ से, रत्नाकर भाई की तरफ से स्टेटमेंट आए होते तो थिंग्स हैड बीन बेटर। दिस इज द ओनली। मुझको बहुत परेशान है कि आपको हम पहले नहीं मिल सके थे। इसके लिए मैं आपसे क्या शब्द कहूं कि अपोलोजाइज करना है तो करता हूं, लेकिन मैंने आपको साफ साफ बतलाया था कि जब भगवान अस्पताल में थे, हमारी तो एक ही योजना थी, एक ही विचार था, एक ही संकल्प था कि भगवान ठीक हो जाएं जल्द से जल्द। उस समय में हमको तो और कुछ ध्यान नहीं था, इसीलिए हम आपसे नहीं मिल सके। देखिए, आप, मैं जवाब दे रहा हूं, आप बीच में और कुछ पूछ रहे हैं। आप तो ऐसे, अब इस प्रश्न को चक्रवर्ती साहब आप चाहते हैं कि जब, लेकिन आप उनके जो आप दूसरे भाई जो प्रश्न पूछेंगे, मैं आप उनसे कहूं कि वो जवाब दे। आप पूछ लीजिए। हाँ, जरूर जरूर बात करेंगे, वो चुपचाप नहीं रहते हैं, आप बहुत कुछ बात करते हैं, बहुत कुछ बात करते हैं। आप जरा प्लीज वेट, आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్. నా పేరు సతీష్ బాబు, అనంతపురం నుండి వచ్చాను. వినియోగదర్శన్ మ్యాగజైన్ కి ఎడిటర్ని. మీరు ఇప్పటి వరకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినంత వరకు మీరు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ట్రస్ట్ మెంబర్స్ 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళలో ఎవరూ మాట్లాడడం లేదు. మేము గత అనేక సంవత్సరాలుగా ట్రస్ట్ మెంబర్ సెక్రటరీ అయిన చక్రవర్తి మాట వింటున్నాము, చక్రవర్తి పేరే వింటున్నాము, కానీ మీ ట్రస్ట్ మెంబర్స్ లో ఎవరు వినలే. ఎవరు కార్యకలాపాల గురించి ఎవరు స్టేట్మెంట్లు ఇలా, ఎవరు ఇలా. చక్రవర్తి గారే ఉన్నారు. చక్రవర్తి గారు ఇన్ని క్వశ్చన్లు వేస్తున్నా ఆయన ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? See, I am controlling this conference. I am monitoring the question. If you wish that he should speak, no, wait a minute. I will ask him to speak. నా పూర్తి కాల, నా క్వశ్చన్ ఇంకా పూర్తి కాల. అడగండి ప్లీజ్. మీరు మా జర్నలిస్ట్ ఏం అడిగారంటే పుట్టపర్తికి వస్తున్నారా అని అడిగారు. ఆయన రాలేదని చెప్పారు. మేము రెగ్యులర్ గా పుట్టపర్తికి వస్తానే ఉంటాం. చక్రవర్తి వారే కనబడతారు, స్వామికి దర్శనం చేసుకుంటాం, మీరెవరూ కనబడరు. మేము వాళ్ళ మాట వినాలా, మీ మాట వినాలా? మీరొక్కరు కంట్రోలింగ్ అంటున్నారు. మీడియా పైన గత అనేక సంవత్సరాలుగా ఆంక్షలు ఉన్నాయి. ట్రస్టుల్లోకి ఎంటర్ కానీరు. మీడియా అంటే మెడ పట్టుకొని తొప్పే పరిస్థితి ఇక్కడ పుట్టపర్తిలో. మీరెందుకు అట్లా చేస్తున్నారు? అంటే గుప్పెట మూస్తే ఏముందని మేము క్వశ్చన్ వేస్తాం, గుప్పెట తెరిస్తే ఏముండదు. అది మీరెందుకు చేయలేకపోయారు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా? మీడియా పైన ఎందుకు ఆంక్షలు? No, 1 minute. I think Mr. Chakravarti should speak because it is felt that he has not said anything. Please, sir, please speak. Sir,
Okay. Oh. Is it okay? మైక్ కూడా కంప్లైంట్ చేస్తుంది చక్రవర్తి గారు మాట్లాడారు. What is it? Translation. No. See, ఆయన తెలుగులోనే మాట్లాడారు. They are asking for translation. Wait. He says he has been seeing only Chakravarti Garu and none of us. It is true, because I have been here at the lotus feet of Bhagwan for 30 years. Most of the trustees have not stayed here. They come and go. As and when they are given responsibilities by Bhagwan, they used to carry it out elsewhere. And perhaps whenever they visited, they also carried out their work here. But I left the IAS. I left the IAS in 1981, came away here. Last 30 years, Swami had been so gracious to give me opportunity to work in the university as registrar. Then as the coordinator of water projects, when for the first time in this country, a comprehensive drinking water supply project was taken up by Bhagwan. And after that, Swami directed me to be the secretary of the trust. So you would see, I'm very happy that you have been able to see me for 30 years. I'm grateful to you for that. Besides, I also have the responsibility of going along with Swami because he wanted me to be around whenever he has some instructions to be given. And therefore, people who have come to the ashram as devotees would have seen me oftener than what they would have done in regard to Mr. Srinivasan or Mr. Giri or Mr. Nagana. So, the fact that I have been seen is good. The fact is that we also do not speak to the media because there is no occasion, except when functions are organized. And when functions are organized, senior people like Mr. Indulal Shah or Mr. Srinivasan, who were part of the celebrations and who took the leading part of it, used to interact with the press and give them the details of the program. Now, I, as a functionary of the trust, had the responsibility to carry out what they went, because I'm more a facilitator rather than a drawer of a program. They're all distinguished people who had to really decide what they should do and what the program should be. And after they got the approval of Bhagwan, they used to communicate that these are things approved, kindly we'll be happy if you can facilitate doing this. So, secondly, somebody asked here, Mr. Chakravarti, I'm not a trustee of the trust. I'm a secretary of the trust. And even when Baba was the sole trustee for so many years, I was the secretary of the trust. Now, last year when he formed the trustees, I continued to be the secretary of the trust. So I don't think I would have sort of ducked any question if you had asked me, if you had come to my office and said this thing. There are a number of reporters here, my friends, perhaps a few of them had met me, and if there is anything to be conveyed, yes. So thank you very much for this, at least, opportunity which you wanted me to take and talk to you about it. Sairam sir, please give chance to those Hello. who have not asked Sir. a question. Anybody else? సార్ మేము మిమ్మల్ని కలవడానికి Sairam sir, no question for శ్రీనివాసన్ గారు Nahi, please. దయచేయండి, please. Please sit down. Would you wait for a second, please? Anybody else at the back who has not asked a question, you have asked no. Please, there are people here waiting. I have to give chance. But I'm saying I would give back to you. One second. Sit down, please. Excuse me, sir. Anybody else from that Excuse me, side? sir. Excuse me. Sir. One second.
एक सेकंड सर, excuse me, sir, I am India TV. Sir, एक सेकंड, you have to wait for a second. I think if you don't have agreement sir, I am Gautam among from India yourselves, TV. we cannot proceed. एक सेकंड, Please have एक सेकंड. you decide and then we will. I don't want disagreement between Just a yourselves. minute, just a minute. Just a minute, hold on. Please behave yourselves. Just a minute. Take a mic and then give it back to you. Right? Okay. Just hold on. సార్ 93లో 6 మర్డర్స్ జరిగాయి. ఆ తర్వాత మీడియం దూరం పెట్టారు. వాళ్ళు ఏమయ్యారు ఏమనేది మీ ఇంతవరకు తెలియదు. దానిపైన మీ చెప్పండి సార్. మీ ప్రశ్న పూర్తి అయిందా? Yeah. Right. Now, what happened in 93 has been adequately gone into by the government for quite some time. They have taken what procedure to do. The matter has been closed. It is not something that we have to do. The government has gone into this matter fully. Investigation was done and it is decided by them what is the conclusion of that. We have nothing to do with that. Government has taken the decision. Now next question please. सर, खबरें आपने जिस तरह से बताया कि जो भी फैसला लिया जाता था वो खुद बाबा ही लेते थे, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या फिर किसको करीब में रखना है उसकी बात हो। तो जब वो अस्पताल में थे तो कौन फैसले लिया करता था और वेंटिलेटर हटाने का फैसला किसका था? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कहा कि जितना भी जमीन है या जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेची नहीं जाएगी, उसका वैल्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन खबर ये आ रही है कि कोलकाता में एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसे जो है बदला गया है और दूसरी प्रॉपर्टी ली गई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका आपके प्रश्न का पहला भाग ये है कि भगवान सब निर्णय लेते थे। जब वो अस्पताल में थे उनके इलाज के बारे में जो निर्णय करा गया है वो डॉक्टर्स लेते थे, हम नहीं। वेंटिलेटर शब्द नहीं, वेदर इट इज वेंटिलेटर वॉट एवर इट इज, मेरे भाई कह रहे हैं कि हाँ, इट वॉज नेवर रिमूव, इट वॉज नेवर रिमूव, but decision has been taken whatever was on treatment by doctors, not by us. Many of us could not go inside on that also. Bas, Bhanji, excuse me. Now, Sir, excuse me, sir. Sir, you have asked already questions. Now I am going to go to this side. Sir, एक second, sir. One question, one last question. My only question is, जिस प्रकार से, sir, I am Gautam Sachdev from India TV. So my last question is one. She asked about some property transaction in Calcutta. I don't think that is right. Sir, my question being, एक second. सर, जिस प्रकार से जो आपके जितने भी जवाब आए हैं वो काफी घुमा फिरा के मिले। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, जिस प्रकार से समाधि की सारी क्रिया और बाबा को भी 3 दिन तक सारे दर्शनार्थियों ने देख सकते थे, लेकिन आखिरी के 45 मिनट में क्यों पर्दा गिरा दिया गया, पहली बात, और क्या बाबा की कोई विल बनाई गई है? आप हिंदी में जवाब चाहते हैं कि हिंदी में? जो उनके खानदान की जी संप्रदाय थी वो आखिरी समय में उसको सब नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो कर्टन गिरे। वो पंडित्स जो वहां थे, पुजारी लोग जो आए हुए थे, उन्होंने फैसला किया कि ये सब कोई देखना नहीं चाहे, इसीलिए ये पर्दा गिरा गया था। यही सिचुएशन है और कोई कारण नहीं है। हाँ, भगवान का कोई हमको अभी तक उनके विल के बारे में कुछ नहीं मालूम। एज फार एज वी नो देयर इज नो विल। आप ही वो लोग हैं जो उनके